So welcome back, viewers. The results of the 17th vice presidential elections have been declared. For those of you joining us right now, Mr. C.P. Radhakrishnan, the NDA nominee, has emerged as the clear winner, securing 452 first preference votes against the opposition candidate, Justice Reddy, who got 300 single preference votes. As per the returning officer, the Secretary General Rajya Sabha, Mr. P.C. Modi, 767 votes were polled before closure of the poll, the total turnout being 98.2%. One ballot box was used for poll. Out of the 767 votes that were polled, 752 were valid, 15 of them were declared invalid. So that makes the quota determined for a candidate to win 377. The winning candidate got 452, much above that prescribed number. So we will take you through the profile, the illustrious career of Mr. C.P. Radhakrishnan, who will be the 15th Vice President of India. Joining us, our distinguished guests. So we will be talking about the strengths that he will bring as, as the 15th Vice President, as also the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha. But before we introduce you to the guests and begin the conversation, let's listen in very quickly to the returning officer, Mr. P.C. Modi, what he had to say about the winning candidate and the polls. The votes. Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव में पीसी जो मोदी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि 452 मतों के साथ जो एनडीए उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की है इस चुनाव में, और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको एक तरह से हार का सामना करना पड़ा है। और दोनों ही अगर उम्मीदवारों को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभर के आई है वोटों की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं जो एनडीए उम्मीदवार हैं उनका, जो राधाकृष्णन जी हैं, उनका प्रोफाइल किस तरह का रहा है, किस तरह की उनकी जीवन यात्रा रही है, किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए के उम्मीदवार चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। राजनीति में सीपी राधाकृष्णन का अनुभव 4 दशकों से ज्यादा का है। वे महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1974 में की और भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वे पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वे दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए।
सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति का सदस्य भी बनाया गया। 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की, जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसे कई मुद्दे जनता के बीच रखे। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 और पदयात्राओं का नेतृत्व भी किया। 2016 में श्री राधाकृष्णन कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 4 वर्षों तक वह इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कॉयर निर्यात 2532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2020 से 2022 तक वे केरल भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी रहे। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन एक उत्साही खिलाड़ी भी रह चुके हैं। वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन थे। इसके साथ ही वे लंबी दूरी के धावक भी थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 20 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। So the man with such an illustrious career will now be the 15th Vice President of India, the ex-officio chairman of the Rajya Sabha, to talk about the strengths that he brings with him and how he will face the proceedings in the Rajya Sabha now as the presiding officer. I'm joined by an illustrious panel. Let me introduce the guests to you. Mr. Praful Ketkar, editor, organizer, Mr. P.K. Malhotra, former law secretary, Government of India, Professor Sunil Chaudhary, he's Professor of Political Science, Delhi University. All 3 guests joining us virtually. Gentlemen, thank you very much for your time. Mr. Ketkar, let me begin the conversation with you. The first word on the outcome of the vice presidential election. Of course, it was on expected lines, but the winning margin is something that the NDA also wouldn't have expected. Certainly. In fact, when the voting was over and the way opposition, election managers talked about the 100% voting and 315 votes from the opposition side, so that time it was expected that at least those numbers will be secured. But what has happened finally is, and NDA on the other hand was expecting somewhere around, besides its own 411 or 13, up to 425 with YSCPR Reddy coming in. Right. But NDA candidate getting 452 is a very, very remarkable number. Again, it shows when it comes to the election management, when it comes to marking person to person, BJP-led NDA has, mastered the art. But more importantly, there were 2 critical issues that were involved in this. One was about the candidature and second about the agenda. And on both these fronts, I think now opposition will have to rethink whether they want to. And obviously the agenda of vote cherry would not apply here simply because it was a ballot paper vote, neither EVM nor, a kind of electoral rolls that opposition has been talking about. So that is another lesson for opposition perhaps. Certainly. And Manoj, before we begin conversations with the other 2 guests, let me inform our viewers that congratulatory messages for the winning candidate, the Vice President-elect Mr. C.P. Radhakrishnan, have begun to pour in. The Home Minister has greeted Mr. C.P. Radhakrishnan on being elected as the 15th Vice President of India. The Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Dhami, has also sent in messages. So celebrations clearly
clearly there in the NDA camp. But at the same time, the opposition's candidate, Justice Reddy, his first reaction after losing the vice presidential polls have also come in. So let me read it out for our viewers. On social media, he said that he humbly accepts the result with abiding faith in democratic processes of the great republic. जी टीना, आप अगला सवाल पूछें उससे पहले प्रफुल्ल जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने उम्मीदवारी की बात की, अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी की, तो भारतीय जनसंघ से सफर शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी में उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो बचपन से ही जुड़े रहे, कार्यकर्ता स्वयंसेवक रहे। आप इस सफर को कैसे देखते हैं कि भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, नीचे से आए हुए कार्यकर्ता का एक संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या और पहलू हैं इसके, क्या संदेश है इसका? देखिए मनोज जी, उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि कैंडिडेचर ये बहुत मायने रखता है सीपी राधाकृष्णन जी का, क्योंकि तिरुपुर जैसे छोटे से गांव से आते हैं। तिरुपुर सिंबॉलिकली भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गारमेंट का हब है, भारत का सबसे बड़ा गारमेंट का एक्सपोर्टिंग हब तिरुपुर रहा है, वहां से सीपी राधाकृष्णन आते हैं। कॉयर इंडस्ट्रीज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसोसिएशन है उसके चेयरमैन रहे हैं। और ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जो 16वें साल में संघ के स्वयंसेवक बनते हैं, उसके बाद जनसंघ का ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के प्रदेश कार्यकारिणी में आते हैं, जनता पार्टी और इमरजेंसी के खिलाफ एक आंदोलन लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद अटल जी के दक्षिण भारत के सबसे विश्वस्त एक कार्यकर्ता के नाते वो ग्रूम होते हैं। जैसे अटल जी को कहा जाता था वैसे दक्षिण भारत में इनको अजात शत्रु कहा जाता था, सबके साथ अच्छे संबंध, बहुत ही मृदु स्वभावी राधाकृष्णन। और ऐसे में कोयम्बतूर जैसी सीट पर एक प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है, 98-99 में एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर भी आते हैं और अपने काम से एक अपना प्रभाव भी इस क्षेत्र में निर्माण करते हैं। फिर उनका प्रदेश के अध्यक्ष के नाते, राज्यपाल के नाते जो एक सफर रहा है, मैं मानता हूं कि ये दिखाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, इन दोनों का यदि कोई एक सिंबल इस रूप में यदि हम देख सकते हैं तो सीपी राधाकृष्णन को देखें। जी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने एक संदेश ये भी दिया सीपी राधाकृष्णन के जरिए कि बीजेपी के भीतर एक साधारण कार्यकर्ता किस तरह से अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाता है और एक विभिन्न पदों पर होते हुए कैसे देश के उपराष्ट्रपति पद तक वो पहुंचता है। टीना, ये साफ दिखा था। Absolutely. And I think going forth, because the Vice President is also the ex-officio chairman of the Rajya Sabha, there are huge expectations in terms of how he will preside over the upper house of Parliament, which is known as the House of Elders. Let me go across to Mr. P.K. Malhotra, former Law Secretary. And in that context, Mr. Malhotra, now that Mr. C.P. Radhakrishnan, we spoke about his illustrious career. He's been a two-term member of Parliament. He's been governors of several states. And a little while ago, we were also discussing that even as governor, when he took over as governor of Jharkhand, what set his term apart was that in the first 4 months, he happened to travel across all districts of Jharkhand. So, of course, in addition to the experience, he has that affable nature. He is also known as a no-confrontational leader, somebody who will now be the Rajya Sabha chairman as well. What are the procedural expectations from a man like Mr. Radhakrishnan, who will now be the chairman of the Rajya Sabha, conducting proceedings in a house which of late is seeing a lot of disruptions and adjournments? Mr. Malhotra, please unmute yourself, sir.
We seem to be facing some audio problem in connecting with Mr. Malhotra. While we try and fix that, let me go across to Professor Sunil Chaudhary. Professor Chaudhary, thanks for joining us. How do you look at this outcome? Of course, it was expected, but more than the test in numbers, it's about the NDA strategy and the seamless execution in getting the candidate of their choice elected to the second highest constitutional post of the country? Yeah, I would just say that's the 15th vice presidential position under the 17th the electoral elections, the vice presidential position. One could say from Radhakrishnan to Radhakrishnan. That is the first Vice President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and we have our 15th Vice Presidential candidate, C.P. Radhakrishnan. So this one could see a sense of continuity in terms of illustrious career, with which we have just seen how C.P. Radhakrishnan happens to have a man from local coming to the global. So from his grassroots experiences, both as an administrator, as a disciplinary cadre, and as a parliamentary leader with huge exposure in terms of parliamentary politics, the local politics, state politics, and even the global political experiences. From that perspective, I could say that this rich experience would help Radhakrishnan ji to bring about the parliamentary practices from confrontational politics to consociational politics, to which we all are expecting. Secondly, one could also see that how a grassroots man has come at the helm of affairs. His rich experience as governor of, say, Jharkhand or Puducherry or even the Maharashtra would actually make him a good administrator with rich administrative acumen, which will also help him out in reaching out to the opposition, because the opposition has always seen vice presidential candidate as the chairperson who is more to politics and less to administration. But this rich experience would, I hope, that would try to bring about a balance between the treasury benches and the opposition. Professor, we'll continue talking about more on that. Let me read out Prime Minister Narendra Modi's congratulatory message for Mr. C.P. Radhakrishnan. He says in his message, congratulations to Thiru C.P. Radhakrishnan ji on winning the 2025 vice presidential election. His life has always been devoted to serving society and empowering the poor and the marginalized. I'm confident that he will be an outstanding vice president who will strengthen our constitutional values and enhance parliamentary discourse. Remember, the Prime Minister was the first to cast his vote in the 17th vice presidential election, which saw a direct contest between NDA nominee Mr. C.P. Radhakrishnan and the opposition candidate Justice Sudarshan Reddy. Clearly, the results indicate a huge winning margin, something that the NDA also did not expect. They expect their numbers stacked up somewhere around 425, but 452 indicates that voting across party lines and cross voting has also happened in his favor, which of course gives NDA a significant boost. Let me go back to Mr. Malhotra. I tried asking him about the rich experience, the strengths that Mr. Radhakrishnan brings along with him. How do you see it adding value and strengthening his additional role as the ex officio chairman of the Rajya Sabha in conducting the proceedings of the House of Elders? Mr. Malhotra, you'll have to unmute yourself, sir, if you can hear me. Mr. Malhotra, can you hear me, sir? So still facing audio issues with Mr. Malhotra. Meanwhile, the Congress president has also tweeted for Mr. C.P. Radhakrishnan. He says, we hope the vice president-elect will uphold the highest ethos of parliamentary traditions, ensuring equal space for the opposition. So that's something which related to which I was throwing up a question to Mr. Malhotra. It seems we're still facing a connection problem with him. Mr. Ketkar, I'll take that question to you because given the affable nature
career and the no controversy career that Mr. Radhakrishnan has had. I was reading that he is fondly referred to as the Vajpayee of Coimbatore because of his affable nature and his ability to build consensus, reach out to leaders across party lines. How do you see that enabling his role as the chairman of Rajya Sabha? See, Tina, Rajya Sabha is a place where one expects more a seasoned and more matured debates. Secondly, because you don't have Rajya Sabha has always seen for last few decades a very fractured kind of composition. So the party that is having majority in Lok Sabha need not always have. Though NDA is a little bit comfortable in last few years, there I think the role of the vice president, who is also the president of or chairman of the upper house, becomes very important, because most of the matters that are related to the federal in nature, where states are also involved, there you need right voices to get representation, and that is how the role of a Rajya Sabha chairperson becomes very, very critical. There I believe Mr. Radhakrishnan and his nature, where he is seen more as a person with almost non-enmity with anybody. He can have a dialogue across the party line. He is more a statesman, a very senior statesman kind of person. And that position, I think, will be very, very critical, not just in getting the agenda of Rajya Sabha forward, but also bridging the bridges when it comes to the issues of national interest, when especially we are seeing critical things happening around the world. जी बिल्कुल सुनील चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह के परिणाम उभर के सामने आए हैं, खास तौर से सीवी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले हैं, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं, और जबकि जयराम रमेश जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि हमें 315 वोट मिलेंगे। जो आंकड़े दिखते हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो रणनीति थी उसमें कहीं चूक हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? एनडीए का विस्तार हुआ है, एनडीए को व्यापक समर्थन मिला है? देखिए, एक तो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग फिनोमिनन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इन द सेंस कि पार्टी विप वहां पर अप्लाई नहीं होती हैं। इसलिए जो भी वोटर है, जो पार्लियामेंटेरियन जो वोट करने के लिए जाता है, जैसा कि विपक्ष भी बार बार कह रहा था कि सभी सांसदों को अपनी अंतरात्मा से मत देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अंतरात्मा का जो मत है वो इस बार सीपी राधाकृष्णन जी के स्टेटमेंटशिप को लेकर, उनके डिसिप्लिन, डोसाइल और डेडिकेटेड नेचर को लेकर उनके पक्ष में चला गया। इसमें स्वाभाविक है कि एनडीए की राजनीति, एनडीए की रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी, in fact, news just coming in that returning officer and Secretary General Rajya Sabha, Mr. P.C. Modi, has handed over the winning certificate to Mr. C.P. Radhakrishnan, the Vice President-elect, on winning the candidate. He is, in fact, the winning candidate of the Vice Presidential Election 2025. This was the 17th Vice Presidential Election. Mr. Radhakrishnan will be going for the 15th Vice President of India. We've spoken about how illustrious his career has been as a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, as a two-term member of Parliament from Coimbatore. He is known as Ajat Shatru because of his affable nature, the Vajpayee of Coimbatore, because he has the ability to build consensus cutting across party lines. Congratulatory messages you can see on your screens coming in, right from the President to the Prime Minister, Defence Minister, Home Minister, everyone congratulating the President. Am I audible now? Am I audible? Yes, Mr. Malhotra, we can hear you now. You can also see messages from the Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla. So clearly celebrations in the NDA camp. This was on expected lines, given how the numbers stacked up in favour of the NDA. Mr. Malhotra, now that you can hear us, let me bring that question to you. We've discussed how,
from everyone who knows Mr. C.P. Radhakrishnan, he has a reputation of being a consensus builder. How do you see that helping him in reducing disruptions, improving productivity in the Rajya Sabha? First of all, I am happy that the country got a new vice president with a very vast experience working at the ground level as well as working at the apex level as Lieutenant Governor, Governor, MP, member of committees, and representing the country in international forum. Right. Because he has worked at the ground level, so he has touch with the man on the ground and he understands the problems of the common man. We are the largest democracy of the world and we are a unique example of unity in diversity. Our republic is very strong and we have full faith in our democratic institutions. The present election of the vice president proves this thing. And vice president, because he is also ex officio chairman of the Council of State, to whom we normally call as Rajya Sabha, we are of the view that because of his vast experience having worked at the ground level, he will bring a kind of coordination which is required to be seen in the upper house. Unfortunately, for the past few sessions, we have been seeing that there has been no coordination, there has been no floor management between the ruling party and the opposition. But if the leader takes a tall stature and he is able to carry both the parties, then I think the legislative business can be conducted in a much better way and the country will see that better legislations are passed because of the debate which takes place in the parliament. So with his vast experience, I'm very optimistic that citizens will be getting their due and they will say that the upper house of the parliament functions in the way people expect it to function and in accordance with the provisions of the constitution. I think that's what Defence Minister Rajnath Singh has also indicated in his message. Let me read out the message while congratulating Shri C.P. Radhakrishnan on being elected as the Vice President of India. The Defence Minister has said that throughout his distinguished public life, Mr. Radhakrishnan has embodied humility, integrity and a deep commitment to service. His vast experience, profound knowledge of constitutional and legislative affairs and unwavering connect with the people will further enrich his new role. He says, and I quote, "I am confident that under his leadership, the Rajya Sabha will scale new heights and our parliamentary traditions will be further strengthened. My best wishes to him for a successful and impactful tenure." In fact, that is something that Mr. Malhotra has spoken about, Professor Chaudhary. Mr. Radhakrishnan is known for his grassroots connect. He has a relatively non-confrontational style, something that we have spoken about. Your thoughts on how do you see these qualities helping him build trust across party lines, because that's most required in the upper house, and especially at a time when we are seeing intense political polarization, which is leading to that confrontation that we often witness in the upper house? You see, the polarization usually happens in case of contesting elections. And as the opposition was saying that it was an ideological battle between the two camps, I would say it was only a constitutional contest. So seeing the outcome of the vice presidential results, one could see that C.P. Radhakrishnan ji is a grassroots man coming to the constitutional position as a constitutional man. So this kinds of, say, the journey from grassroots to the apex institution, that is the Rajya Sabha, one could see that with vast and rich experience, C.P. Radhakrishnan ji would be able to bridge this gap between the opposition and the treasury benches, and this confrontationist policy would be contained with this consociational politics in the sense because unlike others, he may not be seen as a pure political man. He's a man of administration. I would say that he is not merely a Sashak, but also an Anusashak and a Prashashak. His rich experience as a governor, lieutenant governor, as a member of parliamentary committees and a member of UN delegation, even UN delegation to Indian delegation to United Nations General Assembly, even to the delegation to Taiwan, and his expertise in handling critical cases, whether it is in the context of the coir board export or in terms of
the scams, some scams in the parliamentary transactions in the business. So from that perspective, one could see that Radhakrishnan ji was able to handle all these delicate and critical issues in a very amicable manner. So without showing any biases, one could see his role as the vice president as well as the chairman of the House of Elders. He would be able to bring about both the groups, the treasury branches and the oppositions to the common framework of more consultation and deliberations and discussion. That is what now we all expect from the Rajya Sabha at this critical stage. जी बिल्कुल सुनील चौधरी जी, लेकिन प्रफुल्ल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति पद के लिए और उसमें एनडीए को एक बड़े अंतर के साथ विजय हासिल हुई है। जाहिर तौर पर चुनाव कोई भी हो उसको अपने संदेश होते हैं, अपने मायने होते हैं। अगर जो विपक्ष की राजनीति है, जैसा अभी कहा गया कि विपक्ष जिस तरह से आइडियोलॉजी की बात करता है, लेकिन विपक्ष ने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को उम्मीदवार अपना बनाया, जबकि दूसरी ओर एनडीए ने, बीजेपी ने एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का, जिसकी 4 दशकों की अपनी राजनीतिक यात्रा है, सामाजिक यात्रा है जीवन की, जिसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा है, आप कैसे देखते हैं जो उम्मीदवारी का मुद्दा है, जिस तरह के परिणाम उभर के सामने आए हैं? देखिए मनोज जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने खास करके ये तय किया कि हम कैडर और कमिटमेंट के क्रेडेंशियल्स के साथ इस चुनाव में जाएंगे। दूसरी तरफ जब फॉर्मर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को एनडीए ने यूपीए या आज का जो इंडिया अलायंस है उसने जब कैंडिडेचर दिया, तो उन्होंने इसको एक तरीके से हमेशा का उनका जो प्लैंक है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान की लड़ाई, इस प्लैंक पर ये किया। लेकिन हुआ क्या इसमें कि एक तरफ सीपी राधाकृष्णन, जिनका पॉलिटिकल सबके साथ अच्छा संबंध रहा है, संवाद रहा है, वो मिलते गए, लोगों से संवाद करते गए और एक तरीके का मैसेज उनका ये था कि राज्यसभा का कामकाज संवैधानिक पद्धति से, राज्यसभा के नियमों से ठीक चलेगा, इसके लिए मैं प्रयत्नरत रहूंगा। दूसरी तरफ विचारधारा की लड़ाई की बात करते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के संदर्भ में 2 बातें जो चर्चा में आई जी, एक उनके दिए हुए जजमेंट्स, वो चर्चा में आने चाहिए नहीं आने चाहिए, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन खास करके साल्वाजुडूम को लेकर उनका जो जजमेंट आया था वो, और दूसरा कल उनका लालू प्रसाद यादव से मिलना। ये 2 बातें जो चर्चा में आई, तो एक होता है, एक तो गिवन पोजीशन होती है कि भाई ठीक है, हमको पता है किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन उसमें भी जो ऑप्टिक्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू कन्वे। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस रहा, वो इसमें कोई कद्दावर कांग्रेस नेता को उतारकर या कोई अपने विचारों के आधार पर उतारकर इसमें से एक अपना आइडियोलॉजिकल मैसेज दे सकता था कि व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव वी वांट टू प्रपोज, जो उसमें पूरी तरह से फेल हुए। एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन, फॉर्मर जज लाकर, और जिनके जजमेंट्स के बारे में अनावश्यक चर्चा हो सकती है अब, या उन्होंने जैसे कहा कि क्या संवैधानिक मामले में जो स्वाभाविक रूप से प्रश्न है, और कल कुछ जजेस ने एक चिट्ठी भी जो सार्वजनिक की कि भाई जो जिन कोर्ट ने जिनको कन्विक्ट किया है, ऐसे व्यक्ति को मिलकर ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंततः ये प्रश्न उनको कहीं ना कहीं हॉन्ट करता रहा, और जो जिस विचारधारा की लड़ाई की बात करते वो करके उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, वो विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ नक्सलवाद और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इन 2 मुद्दों पर आकर टिकी। प्रफुल्ल जी, हम विपक्ष की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने तो संदेश दे दिया कि किस तरह से उसका एक व्यापक आधार देखने को मिल रहा है, जो परिणाम उभर के सामने आए। लेकिन जो विपक्षी खेमा है, जिसमें अगर बीजेडी की मैं बात करूं, बीआरएस की बात अगर की जाए, तो इन दलों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं, क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, इनको देखिए ऐसा है कि उनको अभी बीजेपी वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कांग्रेस लगभग वहां से, चाहे उड़ीसा हो चाहे वो, तो ऐसे में उनकी मेन लड़ाई जो है वो अभी आने वाले समय में बीजेपी के साथ है। ऐसे में वो ओपनली बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उनको कांग्रेस के साथ जाना में, क्योंकि वो एंटी कांग्रेसिज्म से आए हुए दल है। ऐसे में कांग्रेस के पास बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वो
एक नए तरीके का संवाद सबको साथ में लेने का प्रस्तावित कर सकते थे। वही वाईएसआर रेड्डी वाले कांग्रेस के साथ भी हुआ, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे वोट्स थे। एआईडीएम के जैसी पार्टी के साथ ये हो सकता था राज्यसभा में उनके पास। तो मुझे लगता है कि एक जो इंडिया अलायंस के दायरे को थोड़ा सा एंटी बीजेपी प्लैंक पर बड़ा करने का जो एक मौका था वो कांग्रेस ने गवा दिया है जी। और कितना ये अलायंस अपोजिशन का फ्रजाइल है, वो कुछ इश्यूज को लेकर आता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हुए, ईवीएम को टारगेट करते हुए, इलेक्टोरल रोल्स को टारगेट करते हुए नहीं चलेगा। किसी ठोस वैचारिक मुद्दे के आधार पर इनको लोगों के सामने अपने विचार लेकर जाने होंगे और उसके लिए एक रणनीति भी अलग अलग प्रदेशों के राजनीतिक दलों के साथ बनानी पड़ेगी। यह फिर से एक बार मैसेज इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव ने दिया है। Certainly. How will this outcome and, the results of the vice presidential election impact the opposition strategy, especially inside the Rajya Sabha going forward, is something that we will take across to Professor Chaudhary as well. But Mr. Malhotra, let me also take in the opportunity to understand from you the fact that the 15th vice president has now been elected. He will take over as Rajya Sabha chairman at a time when we are seeing significant and repeated disruptions. The just concluded monsoon session of Parliament saw less than 50% productivity. How do you see that changing in context of a man who is known as the Vajpayee of Coimbatore, who is hailed as somebody who has the ability to build consensus across party lines? He is known for his affable nature, qualities that will be required as Rajya Sabha chairman to build consensus in context of the House and the functioning of the upper house. See, the main job of the vice president is to run the Council of States, that is the Rajya Sabha. Right. He is the ex officio chairman of Rajya Sabha. And this will be the biggest challenge for the newly elected president as to how best the coordination between the ruling party and the opposition is managed on the floor so that business of the House can be transacted in a fair and impartial manner. As we normally in respect of justice we say, justice should not only be done, it should be seen to have been done. I think a similar kind of conduct is needed from the chairman while presiding over the Council of States, where he should show that he is impartial and he is giving proper opportunity to both sides so that the opposition doesn't get an opportunity to make any allegation of impartiality favoring the treasury benches at the cost of listening or not listening to the viewpoint made by the opposition. I think this is going to be a challenging job for him. But I personally feel the kind of profile of the newly elected president, vice president, which we have seen, because he has worked at the ground level, he has already worked, he has been a two-time MP, he has been governor of 3 states. So he will be knowing best how to coordinate and how to manage the opposition as well as the ruling party to ensure that the business of the House is transacted in free and fair manner. And I hope and I'm expecting that he will be able to succeed in that direction. Professor Chaudhary, I think a related question I'll take from you before we proceed, Manoj. Frequent parliamentary disruptions which force adjournments, and I just cited the just concluded monsoon session. We all saw how the productivity was impacted because of that. It in a lot of ways erodes the trust, the credibility of the institution which is the Parliament, the temple of democracy. So in that context, the 15th Vice President will have, a huge challenge, and we as common people will have huge expectations from him in terms of setting things right, in terms of strengthening the trust or rebuilding the trust of people in the institution of Parliament. Professor Chaudhary, given his proactive nature, given how he's made significant changes early
earlier on in the positions that he has held. What kind of expectations can you and I and the larger citizens of India can have from the President-elect, the upcoming Vice President of India, who will be the Chairman of Rajya Sabha? You see, the issues which used to govern the Council of States before this election for Vice President had taken place, issues were different, and I believe that the way these elections have taken place and how both the opposition as the Treasury benches actually contested the election for Vice President, the result shows that now this bonhomie between the two groups, that is opposition and the Treasury benches, would be reconciled, and given the experience of the newly elected Vice President and his huge experience, exposure in terms of administration and governance, I would say that his abilities as state craftsmanship and the statesmanship, both these things would make him making more overtures to the opposition parties, and these kinds of reconciliatory attitude and reconciliation with the opposition would actually make him, help him or enable him to make the functioning of the House of Elders in a better way. Secondly, I would also say that now the opposition used to move beyond its prejudice, ideological agenda of making allegations and counter-allegations against the Treasury bench. It used to be reflected at the vice presidential candidate or as the vice president. I think that would be over now, and I think that the time has come that both opposition and the ruling party would sit together, and an important role, as we have seen, a very impartial, neutral role of the newly elected vice president, as has been seen in terms of his experience and his working, not only within the parliament but outside the parliament, as constitutional position, holding the position of governor, lieutenant governor, as I have rightly stated, that he is a grassroots man coming to this constitutional position of a constitutional man. So this long journey would be able to basically address other adversarial critical issues which usually leveled by the opposition. So I believe that opposition would now hear his sane advice, his chairmanship and his way of handling both the groups as chairman of the House of Elders. जी सुनील चौधरी जी, आपने जो बात विपक्ष की रणनीति की या विपक्ष की बात की संसदीय प्रक्रिया को लेकर, संसद की कार्रवाई को लेकर, प्रफुल्ल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात हम विपक्ष की भूमिका की कर रहे हैं, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। उम्मीदवारी की बात हमने कर ली, जिस प्रकार के एजेंडे की बात थी वो भी उभर के सामने आया, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष जिस गठबंधन की बात करता है, क्या उसमें एकता है? एक उम्मीदवार, राजनीतिक व्यक्तित्व का कोई उम्मीदवार सामने नहीं ला पाए, नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार सामने आया। सुनने में यह भी आता, इस तरह की चर्चा भी थी कि डीएमके और दूसरे दलों ने कहा था कि साहब नॉन पॉलिटिकल ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी आगे करे तब समर्थन करेंगे। इस तरह की जो बातें हैं इंडिया गठबंधन के बीच, उसको आप कैसे देखती हैं? जिस विपक्षी एकता की बात होती है, क्या वो विपक्षी एकता है? देखिए, सामान्यतः ये अपेक्षा होती है कि जब इस तरह का चुनाव हो तो आइदर इसमें कंसेंसस बिल्ड हो, और मान लो कंटेस्ट भी हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक अपोजिशन की साझी रणनीति हो। लेकिन इस चुनाव ने एक स्पष्ट कर दिया कि अपोजिशन में कोई बहुत विषयों को लेकर सहमति नहीं है। हमको पता नहीं है कांग्रेस और केजरीवाल के बीच अभी कितना तालमेल है। आरजेडी में एक तरह का सोच ये चल पड़ा है कि अच्छा खासा जंगल राज का जो विषय था उसको ओवरटर्न करने का मौका था, और पूरा का पूरा ये वोट चोरी का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी उसका लाइमलाइट लेकर गए, तो आरजेडी कैडर में उसको लेकर असंतोष है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है, लेकिन इस बार जो था वो दक्षिण में बहुत ज्यादा कांग्रेस को प्रेशर था, क्योंकि एक जमाने में दक्षिण ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और बीजेपी के लिए हमेशा से दक्षिण से ये सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आना, वाइस प्रेसिडेंशियल उनको कैंडिडेचर मिलना और वो इतनी मेजॉरिटी से जीत कर आना, इसका एक ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी ने एक तरफ सक्सेसफुली रूलिंग अलायंस ने दिया है। दूसरी तरफ मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था कि वो एक कंसेंसस अपोजिशन के अंदर बिल्ड करके कोई सही में
मुद्दों के आधार पर वैचारिक लड़ाई के नाते इस कंटेस्ट में उतरते तो उसमें वो फेल हुआ है। इसी वजह से उनको एक रिटायर्ड जज को, हालांकि उनको सिंबॉलिकली ये लग रहा था कि जज आने से वो जो संविधान की लड़ाई जो कह रहे हैं उसको मजबूती मिलेगी, लेकिन वो दाव कहीं पे उल्टा पड़ गया ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। पीके मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर सी बात है हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी एक लंबी यात्रा हो चुकी है। बात चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव की हो या किसी और चुनाव की बात हो, देश ने दिखाया है कि किस तरह से वो लोकतांत्रिक ढंग से इन पदों पर चुनाव करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हमारी एक विरासत रही है संसदीय लोकतंत्र की, उसको आप कैसे देखते हैं जब इस तरह से दलों की भागीदारी के साथ चुनाव होता है, मतदान होता है और एक संदेश लोकतंत्र के लिए जाता है, मतदान की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से? देखिए, इस चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति उभर कर सामने आई है उसके ऊपर प्रफुल्ल जी ने बहुत अच्छा एनालिसिस कर दिया है जी। लेकिन अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें और लोकतंत्र की बात करें जी, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, हमारे यहाँ वो कैपेबिलिटी है और इस तरह के लोग हैं कि एक जमीन से उठा हुआ आदमी भी हमारे देश में उच्चतम पद पर जा सकता है और वहां बैठकर संविधान के अनुसार अपना कार्य कर सकता है। और इस बात को लेकर के जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया उसको लेकर मैं ये कहूंगा कि शायद एनडीए का जो फ्लोर मैनेजमेंट या कैंडिडेट सिलेक्शन की जो दृष्टि थी वो प्रोबेबली ज्यादा दूरदृष्टि थी एज कंपेयर टू कैंडिडेट ऑफ इंडिया अलायंस। शायद उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो मिस कर दिए होंगे जिसकी वजह से कुछ एक वोट जो थे, जितना कि एनडीए ने सोचा था उनसे ज्यादा उनको वोट मिल गए और दो पार्टियों को उसके लिए जो था, दो पार्टियों ने इसका वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं भी लिया। अगर मैं पॉलिटिकल एंगल को एक तरफ छोड़ दूं, पॉलिटिक्स की या राजनीति की बात नहीं करूं, केवल संवैधानिक संस्थानों की बात करूं, तो मेरा मानना यह है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हैं और इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को वर्ल्ड ओवर एम्प्रिशिएट भी किया जाता है और हमारे जो कायदे कानून हैं उसको दूसरे देश फॉलो भी करते हैं। इसके लिए मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि मैं एक और भी कार्यक्रम देख रहा था, उसमें भी ये बात कही और मैं उसी को दोहराना चाहूंगा। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट चल रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना था, तो डॉक्टर अंबेडकर जो कि हमारे इसके प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, उनका ये कहना था कि हमारा संविधान कैसा है ये इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हैं, वो इस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली पर संविधान की सक्सेसफुल जो है वो डिपेंड करती है। तो मैं समझता हूं हमने अपनी कार्यप्रणाली से इस बात को शो कर दिया है, इसको जनता को बता दिया है और पूरे विश्व को बता दिया है कि हम संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊंचे से ऊंचे पद पर कार्य करने का अवसर दे सकते हैं। Clearly, and I think that reinforces the strength of a mature democracy that India has become today. Before I, get in a perspective from Professor Chaudhary on that, let me read out Lok Sabha Speaker Mr. Om Birla's congratulatory message to the Vice President-elect, Mr. C.P. Radhakrishnan. In a social media message, the Lok Sabha Speaker has said, and I quote, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर श्री C.P. राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाई। निश्चय ही आपके सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन का विस्तृत लाभ राष्ट्र को मिलेगा तथा आपके समृद्ध अनुभव से विधायी परंपराएं और सशक्त होंगी। शुभकामनाएं। So clearly huge expectations from the upcoming chairman of the Rajya Sabha, the 15th Vice President of India. But Professor Chaudhary, there's an interesting observation and the intervention that Mr. Malhotra made about India, the manner in which we are conducting elections in a free, fair, transparent manner, and the example that we set out for the world over. I don't know how we can relate to it, but the question that I want to ask you is, on a day when the 17th vice presidential election was the biggest news, the developments in neighboring Nepal grabbed most of the headline today.
In context of what happened in Nepal, on contrast, we saw that India's vice presidential election concluded in a more stable, orderly fashion, while our neighbor witnessed political upheaval. In terms of the strength of democratic institutions in both the countries, how do you see this contrast? And additionally, do you think it's moments like these that reinforce India's image as a mature democracy, not just in the neighborhood, but for the world over? Of course, because ours is a constitutional democracy, and constitutional democracy functions on the principle of working of institutions in more autonomous, transparent and accountable manner. This is a unique feature, and one could see that the neighboring countries may have partially or fully showing their adoption to the constitutional polity. But constitutional polity has actually broadly failed in our neighborhood. One could see the experiences from Pakistan or Bangladesh or previously in Sri Lanka and now in Nepal. We can also go to the West Asian countries where one could see that constitutional institutions are not in a functioning capacity. One could also see most of the African countries where constitutional democracy, they are still aspiring to follow India as an example of a successful constitutional democracy. So from that perspective, when we say, as Baba Sahib has rightly stated, the success of the constitutional institutions depends upon those who actually execute these constitutional institutions in the most efficient, accountable and transparent manner. And that shows that our strength has reflected through the working of institutions. And the parliament is one of the most important institutions, both Lok Sabha and the Rajya Sabha and the elections of the vice president, which have recently been completed, shows that the very peaceful, transparent manner where both the opposition and the ruling parties contested elections. I would again say it was not ideological battle. It was more constitutional contest where freely both the political parties came out with their own candidate. And what is more important for us to show to the world, because I think ours is a unique democratic system where this position of office of vice president may not be seen elsewhere in the world. One could see some parallels between India and America, but I think we go ahead with it because our vice presidential position is seen mostly as neutral, impartial and a non-political institution. Unlike the American, where the vice president happens to be the follower of the president, basically towing the line of an ideology. In fact, let me also get in a word from Mr. Ketkar on this. It's not just Nepal. We've seen similar protests toppling elected governments in Sri Lanka, in Bangladesh. Nepal happens to be the third country in the neighborhood where we've seen protests erupting in a manner following which the leadership has had to resign. But in contrast, when we look at India, Mr. Ketkar, what does it say about the resilience of India's constitutional institutions? See, Tina, we don't appreciate much that many countries got independence with India. India is the only exception. Besides, a dark period of emergency, more or less we maintained our democratic system. We established democratic norms, peacefully transferred powers from one government to another. And we have shown that irrespective of our diversities, our different, poverty, even lack of education, our democratic wisdom is still intact. We are mother of democracy and we quickly adopted to the modern methods of electioneering. Our election commission has played an important role in this. Please see, outside India, whether, in immediate neighborhood or in countries of West Asia or Africa, the democratic systems have been very, very fragile. And because of that, it was very easy to, topple the governments, take over by military coups, or even some small issue turning into the regime change operation, which is not happening in India. Unfortunately, instead of, taking pride in this, there are certain elements, including some opposition parties, who prefer to target the institutions instead of fighting elections on pure issues or ideological basis. And there I'm really worried whether Election Commission, whether Supreme Court, whether, various institutions that are being targeted, even for that matter, media.
So these are the strengths of democracy, and this vice presidential election again shows that we are a mature democracy and we know how to handle our democratic processes with a pure constitutional methods. जी बिल्कुल। पीके मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है, मैं लोकतंत्र की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने पहले उसका उत्तर दिया, जो हमारी एक संसदीय विरासत रही है जिसका उल्लेख पूरी दुनिया में कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। जाहिर सी बात है, कोई भी चुनाव होता है उससे हमारा जो लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र है वो और मजबूत उभर कर सामने आता है। लेकिन जिस तरफ टीना ने बार बार इशारा किया कि जो हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, हमारी जो सदन है हमारा, जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी हर बार इस बात को कहते हैं कि सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, संवाद हो, जनता के मुद्दों पर बात हो, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदन का काम सुचारू रूप से चले, और उसमें जो भी अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो या चेयरमैन हो, सभापति हो राज्यसभा के, उन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि चेयर पर बैठकर वो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पक्ष को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको इस तरह की सोच ना आए कि वो या तो सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं या विपक्ष का साथ दे रहे हैं। उनकी इम्पार्शियलिटी जो है वो उनके कंडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी राधाकृष्णन जी जिस एक्सपीरियंस के साथ राज्यसभा के सभापति का पद ग्रहण करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जनता के साथ भी कनेक्ट किया है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन किया है, गवर्नर भी स्टेट के रहे हैं और एमपी भी रहे हैं, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को भी उन्होंने हैंडल किया है। इसके साथ वो पक्ष और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को किसी को भी इस तरह का आभास नहीं होने देंगी कि वो इम्पार्शियलिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और अगर वो इस समन्वय को दोनों पक्षों के बीच में बिठा लेते हैं तो मैं समझता हूं सदन की कार्रवाई स्मूथली चलेगी और कानून जो है वो जल्दी से जल्दी पास होंगे और पार्लियामेंट का काम सुचारू रूप से चलेगा। Certainly. So the biggest expectation from him is to reduce disruptions, improve productivity in the House, but more importantly, strike a balance between the government and the opposition benches. We'll continue to speak about the various expectations, the outcome of the election results, how will it also alter the opposition strategy going forth in the Rajya Sabha. But right now, we'll slip into a short break. When we return, the guests joining us virtually will continue to be there, but we'll also be joined by a special guest in the studio. So we will continue with this conversation. We'll be right back, viewers. Do stay with us.